Hi friends, my name is Diksha and you are studying Audit with Diksha. Here's my next video and you are on the right place to study Audit. Like, share, subscribe and click the bell icon so that you know immediately anything I upload new. What we are studying? As you can see in the caption, we are studying on the topic of Essay 200. And if you haven't seen my previous video, you can pause this video. You can nahi. You have to pause this video. Before watching this video, it is necessary to watch my previous video. So what are you waiting for? Go and watch it now. Hurry up. Essay 200. So what's the name of Essay 200? Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. And इसके लिए हमने मीमो कोड क्या दिया था? O2E का सा. Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with standards on auditing. क्या तुम्हें याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? तो pause this video and revise it. What is overall objective now? To obtain the reasonable assurance free from material misstatement, express an opinion on the financial statement prepared by management, applicable FRF and report the findings in accordance with essays. क्या आपको याद आ रहा है? एंड मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, इफ़ ऑडिटर डिडंट डू दी ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स, मीन्स अगर ऑडिटर मना कर देता है कि इंगेजमेंट लेटर वो परफॉर्म नहीं करेगा, जैसा फॉर्मेट है ऑडिट रिपोर्ट का वैसा नहीं करेगा या अपने मन से परफॉर्मेंस करेगा, तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मतलब उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है. तो येस, एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब एथिक्स में, as per the ethics chartered accountant act you will be guilty, means auditor be guilty of professional misconduct. Now once we understood the overall objective of the independent auditor, now let's check what are the other requirements of the SA 200. So SA 200 says auditor wait, don't say immediately like I have understood, now I will perform. Let's wait. SA 200 says to you have to compliance with some other ethical requirements. And what are the other ethical requirements of the independent auditor? Here it is. First is integrity. Integrity means sincere, honest, just plain straightforward. जलेबी की तरह सीधा नहीं. Sincere, honest, straightforward. These are the qualities should be in the professional accountant. है ना? A person who is one in thought, word and action. Next is objectivity. Objectivity means no partiality, no subjectivity, no getting influence, no overriding, no conflict, no overriding the decision. Suppose auditor ने fraud या error found किया 20 करोड़ का, तो और मैनेजमेंट क्या ऑडिटर साहब बस इतना ही, तो ऑडिटर बोला ठीक है जाने दो. लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए. नो, देन यू आर बीइंग सब्जेक्टिविटी. Rather than subjective, you should be an objective. Next is professional competence and due care. Auditor is going to audit the client place. So now client always ready with the list कि ऑडिटर साहब शेड्यूल 3 आ गया, ऑडिटर साहब GST आ गया, अमेंडमेंट हो गए. तो लाइक ऑडिटर सेज कि हाँ यू डोंट नो. Then auditor says like I also don't know. No, professional competence. You have to be updated in your professional competence. Client says कि अपने को तो इंडियस हो गया, IFRS लगेगा अपने में, तो CA says कि like I don't know, तो मैनेजमेंट बोलेगा what do you don't know, you are CA. You have to be competent, you have to be technically or skills updated. So professional competence is like to update your knowledge or update in the developments of professional. Like laws में changes हो रहे हैं, GSTs में changes हो रहे हैं. And due care is talking about your work skills. Proper planning, proper document, है ना, proper supervision होनी चाहिए. Like जितना मैंने notice किया, 90% of the CAs, those who have their own firms, are very organized. They always carry their personal diary. एंड उस डायरी में सब लिखा रहता है किससे कब मीटिंग है, कौन सी शेड्यूल है, कौन सा चेक कहाँ क्या डिपॉजिट करना है, किस पे साइन करना है. एवरीथिंग इज रिटन ऑन देयर. इट्स अ ड्यू केयर.
So this is a professional competency and you care. Updated your profession and working skills. Now this I'm sure you surely know. That is confidentiality, not to reveal the information of the client. That is top secret हमेशा होनी चाहिए. But there are two exceptions in confidentiality. First one is required by law and the second is prior consent to the management. The same example. 20 crores का fraud आया. Confidentiality, not to disclose the secrets of the client. So you will not tell anyone regarding this fraud? No. You will tell the regarding the 20 crores of fraud. It is required by law. Now what is required by law? It's like under section 143 subsection 12 report to CG about the fraud. ये कारों में भी आता है duty to report to the CG. Then other than that, not to disclose the secrets and the information of the client unless required by law or the prior consent taken by the management. Next is professional behavior. Avoid such behavior which brings the discredit to the profession. For example, CA सारा काम करता है but थोड़ा सा कहीं कुछ लेता है kind of bribe. So वो सारा कंपनी मैनेज तो कर रहा है बट वो थोड़ा सा ब्राइब ले रहा है. दैट इज वो अपने प्रोफेशन को डिसरिस्प्यूट कर रहा है, मतलब डिसक्रेडिट कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए. तो यू मस्ट बी और यू शुड बी अ प्रोफेशनल in your behavior, in your profession. So it is said it avoid such kind of behavior which gives or which brings discredit to your profession. So now what is ethics? Means ethical requirements of an independent auditor. So here it is, the ethical requirements of the independent auditor. First is integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. Integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior. So now what we are studying, the essay 200, overall objective of the independent auditor. Now what is independence? Now independence means judgment of a person is not subordinate to the wishes or directions of another who might have engaged him for their self interest. मतलब किसी के दबाव में आके सीए को अपना डिसीजन नहीं लेना चाहिए. It should be an independent decision. So I have written that their ethical requirements including independence. So what it say, independent auditor or independence. As for example, we are studying in Companies Act में कि 141 subsection 3 is for the disqualification of auditor. So why that section made? To ensure the independence of auditor, like indebtedness वाला, guarantee वाला या 144 services prohibited. These are all the disqualifications of the auditor. एक disqualification है person, partner and relative who holds any security or interest or indebtedness and guarantee. Why is it saying कि if you are holding one equity share out, you can't do the auditor of that company. If you are in debt to that company of 5 lakhs, you are out. You can't do the audit of that company. A person, partner, relative has given the guarantee of rupees 1 lakh out. If you have a business relationship, you can't do the audit. So all these are just to make these are the steps to make ensure the independence of auditor. For example, suppose for example person, partner and relative can hold the equity shares of rupees 1 lakh but not more than that. So person can't hold the equity share, means those that person who is auditing the company, that partner of that person can't carry the equity shares of that company, those who are going to audit. Relative also can't hold that shares. A particular amount can hold it but not more than that. So suppose we are doing the audit, or auditor is doing the audit of ABC and company. So that audit means that person can't do the audit, disqualification, if he is holding the equity shares. Her that person's partner can't do the, and the relative too. But सपोज़ ABC लिमिटेड की कल क्वार्टरली रिपोर्ट आनी है, तो सपोज़ हम प्रॉफिट हमको डिक्लेयर करना है 150 lakhs. और मार्केट में थोड़ी बहुत बात चलती रहती है कि कल क्वार्टरली रिपोर्ट आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा. तो मार्केट में जो बात चल रही है वो सपोज़ 90 lakhs के अकॉर्डिंग है. तो मुझे पता है कल 150 lakhs का प्रॉफिट हम डिक्लेयर करेंगे एज अ ऑडिटर, मैं कंपनी का.
तो जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम दैट शेयर प्राइस राइज अप। तो मुझे आज पता है कि कल जैसे ही डिक्लेयर होगा शेयर प्राइस राइज हो जाएंगे, क्योंकि आई एम द ऑडिटर, आई एम साइनिंग दी बैलेंस शीट। सो मुझे आज पता है, तो मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, आई कॉल्ड माई फ्रेंड कि तुम ABC लिमिटेड के शेयर्स ले लो, क्योंकि मुझे पता है कल हम प्रॉफिट ही करेंगे, प्रॉफिट ही होगा हमारा। तो हम 50-50 बाद में कर लेंगे। सो दैट, क्योंकि फ्रेंड तो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता है, वो तो ले सकता है। तो ये जो तो ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट एज एन अपीयरेंस है, दुनिया को दिखाने के लिए वो इंडिपेंडेंट एज एन अपीयरेंस है, क्योंकि वो डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आ रहा। बट क्या वो एज अ माइंड इंडिपेंडेंट है? टू कंप्लाई द लॉज ऑफ कंपनीज लॉ, that auditor is the independent in appearance, but is it independent in mind? No. So that code of ethics says कि we want both appearance and for mind, independent in appearance and independent in mind. So ethical requirement includes the independent of auditor. Independent of auditor means independent in appearance and independent of mind. Now comes to attitude of professional skepticism. Skepticism means that questioning mind, not to accept with the blindfold, not to accept anything without any support or evidence. An attitude that includes the questioning mind. लाइक छोटे बच्चे होते हैं जो वो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। सिमिलरली एट द क्लाइंट प्लेस यू हैव टू बी एज अ क्वेश्चनिंग माइंड। यू हैव टू आस्क दैट कि इसका सपोर्ट कहाँ है, इसका एविडेंस कहाँ है, इसकी एंट्री कहाँ है, इसका डबल इफेक्ट कहाँ है, इस पर कौन सा येस लगा, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाई वी आर हैविंग, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट टू बी हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड? being an alert to the condition which may indicate a possible misstatement due to fraud or error. Best example of alert to condition is hide and seek. वो den जो होता है वो कितना alert रहता है ना, कि तुम यहाँ छुपे हो, तुम वहाँ छुपे हो, बाहर आ जाओ। Like similarly, for example, as an audit purpose, suppose 2018-19 में जो traveling expense था वो 10 lakhs था। तो हम क्या उम्मीद करेंगे 1920 में जो होगा वो 10%, 20% या 50% इंक्रीज हो जाएगा। सपोज 10 लैक्स का 15 लैक्स अप्रॉक्स हो गया। बट इफ़ देर विल बी 500 लैक्स, मीन्स अगर तुम ये देख रहे हो ट्रेवलिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर 10 लैक्स था, तो इसे 15 लैक्स हो सकता है। बट तुम बुक्स में 500 लैक्स है, दैट इज़ द पॉसिबल मिस स्टेटमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि ये मिस स्टेटमेंट है ही, बट इट इंडिकेट्स अ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट, कि हाँ मिस स्टेटमेंट हो सकता है। एंड द क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। सपोज यू आस्क फॉर अ रेंट एग्रीमेंट फ्रॉम द क्लाइंट, एंड क्लाइंट ने भिजवा दिया ऑफिस आपके। तो व्हाट वी डू बेसिकली, व्हाट कि रेंट एग्रीमेंट आया, उसकी फ़ोटो कॉपी की, देन स्टेपल किया, पंच किया, फाइल में लगा दिया। भाई एक बार देख तो लेते वो रेंट एग्रीमेंट। हम ऑडिट कर रहे हैं 1920 की, वो रेंट एग्रीमेंट में 1999 है। हम उस रेंट एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि रेंट हमें 20,000 पर मंथ लेना है, और हम बुक्स में क्लाइंट दिखा रहा है 2 लाख। भाई एक बार देख तो लो क्या है कैसा है। सो इट्स अ क्रिटिकल असेसमेंट। यू कांट टेक द पेपर एंड पंच इट एंड कीप इन द फाइल। एक बार देखना है, हमेशा एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखना है, क्वेश्चनिंग माइंड दैट विच ब्रिंग्स दैट अलर्ट टू द कंडीशन which may indicate the possible misstatement due to fraud and error. So overall it's like all पूरा क्या बता रहा है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। What is that importance, मतलब इसका क्या है सावधान रहने का? It brings to the notice of the contradictory evidence, reliability of the evidence. It brings to your notice of unusual circumstances like traveling expense में 10 लाख का 15 लाख होना चाहिए था, 500 lakhs है। रेंट एग्रीमेंट पे 20,000 लिखा था, हम 2 लाख शो कर रहे हैं। all these things. So all these risks will be reduced if you are maintaining your attitude of a questioning mind. You are being alert to the condition. So what is the most important for the auditor? Not to accept anything blindly. So this means that professional skepticism is on the very good side. If you see, there are two ways.
not to suspect anything without reason and not to accept anything without reason. जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे हम पूछते रहेंगे, बट हम जैसे ही सेटिस्फाई हो गए हम पूछना बंद कर देंगे, हम सस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो सस्पेक्ट अगर हम करने लगे तो वो इन्वेस्टिगेशन होगा जो हमारे प्रोफेशन में नहीं है। सो नॉट टू सस्पेक्ट बट नॉट टू एक्सेप्ट anything without a reason. Till the time we don't understand, we ask. Once we understood, we don't ask. 10 times you check the rent agreement, still you are saying no, no, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे. No, you can't be suspicious. You can be cautious. Till the time you don't get any evidence or you are not providing the sufficient support, you can ask. But once you got all these evidence documents, you stop there. So not to suspect without reason or not to accept anything without reason. That is a professional skepticism. Thanks for watching me. I hope you like it. If you have any query or doubt, please comment in the comment section. Thank you.